Everyone. So our topic is types of attacks. Okay. So there are so many types of attacks which are happened on your actual transmission during the various principles. In last video lecture, we have seen that interception, fabrication, modification, and interruption, which are discussed on the confidentiality. Interception happen on confidentiality, fabrication for authentication, modification on integrity, and interruption on availability. Okay, so let's further group. We can group these attacks into two types, that is active attacks and passive attacks. Okay. अगर कोई सवाल पूछता है कि explain the various types of attacks, so you have to write the active attacks and passive attacks first, and then categorize each and every attack into these two categories. Okay, so first is a passive attacks. Passive attacks are those wherein the attacker indulge and eavesdropping or monitoring on data transmission. Okay, in order to in other words, the attacker aims to obtain information that is in transit. The term passive indicates that the attacker does not have attempt to perform any modification to the data. That means this is the one kind of a technique where you are just observing or you are dropping your data during the transmission, but there is not indication for your attacker is to modify the data over a network. Okay, it's just going for the observation purpose. Okay, this is also why passive attacks are harder to detect. Okay, that इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि these are the very hard to detect, because we are not going to perform any operation on the transmission. Uh, we are just retrieving the information from the retrieving the information over the network and use for the further happened whatever the purpose of that particular uh, unauthorized user is having. Okay, so in the general approach to deal with the passive attack is to think about the prevention rather than the detection or corrective action. तो इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, rather than the detection या अटैक होने के बाद भी कोई एक्टिविटी करने से बजाय अटैक होने से पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रिवेंशन देना पड़ेगा, वहाँ पर सोल्यूशन देना पड़ेगा. तो attacks are considered into two parts, that is passive and active attacks. Passive attacks do not involve any modification to the content of the original message. Okay, जैसे आपने बताया. तो there are yeah, it is again classified into two parts, two subcategories. These categories are release of message content and traffic analysis. Okay, passive attacks जो कि हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोगों ने दो और पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. You can write only passive and active attacks. Okay. So release of message contains is quite simple to understand. When we send a confidential email message to our friend, we desire that only he or she will be able to access it. Okay. Otherwise, the contents of the message are released against our wishes to someone else. Okay. So uh, release release of message content means just we are sending a confidential mail, for example, to our friend, and the attacker only get the detail whatever the send from the one friend to another friend. Okay, so we can prevent it by encoding the message. हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, बाय प्रिवेंट करने हम लोग कैसे करेंगे, बाय प्रिवेंटिंग इट बाय encoding the message into a understandable file by the only sender and receiver. Okay. However, if many messages are passing through, the passive attacker could try to figure out the similarities between them to come up with some sort of pattern that provides clues regarding the communication. अगर number of messages हमारे A और B के बीच में चल रहे हैं, तो attacker identifies the same similarities between that particular message or pattern of that message to get the clue what kind of messages are sending from the sender to receiver, and this kind of आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज अ ट्रैफिक एनालिसिस अटैक. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस. मतलब एक सिंपल पैटर्न या सिमिलर पैटर्न को वो ऑब्जर्व करता है and then only it will attempt to access it. Okay, so these are the passive attacks, and next is the active attacks. Unlike passive attacks, the active attacks are based on modification of the original message in some manner. यहाँ पे आप लोगों के एक्चुअल ऑपरेशन होंगे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. ओके, दिस अटैक कैन नॉट प्रिवेंटेड इजीली. हम लोगों को वो प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि अटैकर
uses the many of technology to get that particular message or to compromise your data over the network. However, they can be detected with some effort. वो कहाँ और किस प्रकार से वहाँ पर हुआ इसकी रिकवरी हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं. Okay. And this cat form attack is called is in the form of interruption, modification and fabrication. जो हमारे चार अटैक हम लोगों ने देखे थे उसमें से तीन ये जो है वो एक्टिव अटैक्स में आते हैं. So interruption attacks are called as a masquerade attacks. Modification attacks can be classified replay attacks and alteration of message. मॉडिफिकेशन में दो होंगे, एक तो रिप्ले अटैक्स हो सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ मैसेज हो सकते हैं. एंड द फैब्रिकेशन अटैक्स कंसिडर एज अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ये यहाँ पे देखिए आप लोग पूरा का पूरा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्टिव अटैक्स उनके तीन टाइप और मॉडिफिकेशन में दो टाइप दिए. Masquerade is caused when an unauthorized entity pretend to be another entity. ओके. इंटरप्शन मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई अनऑथराइज एंटिटी है वो आपकी प्रिटेंड करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर सी माइट पोज एज अ यूजर ए और बी के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है बट बी इंस्टेड ऑफ ए एक्चुअली सी इज गोइंग टू ट्रांसफर द मैसेज टू बी. The user might understand that A is providing sending a message to B or send one. In a replay attack, user captures a sequence of event or some data units and represent them. Okay. For instance, देखिए कैसे होगा इसमें. A wants to transfer some amount to user C's bank account. So both user A and C have accounts with the bank B. So user A might send an electronic message to bank B requesting for the funds transfer. User C could capture this message and send the second copy of the same bank to B. जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि A और ए वांट्स टू ट्रांसफर. ए और सी को पता है कि कितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है बी से, बी के थ्रू. ओके. तो ए ने तो उसने आप लोगों को भेज दिया कि सेंड मैसेज टू बैंक बी एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द फंड ट्रांसफर. एंड सी जो होगा वो क्या करेगा, वो मैसेज को कैप्चर करेगा और फिर उसमें सम काइंड ऑफ changes will change करेगा और treat this is a second as a different one. Okay. And the funds transfer request from the user A ने जो request भेजी उसको थोड़ा सा alter करके वहाँ पर वो भेज सकता है. Okay. So therefore user C would get the benefit of the funds transfer twice, one authorized and once through a replay attack. Okay. एक सिचुएशन ऐसी कि हम लोग एक ही मैसेज को दो बार वहाँ पर भेज सकते हैं. ओके. दो बार हम लोग उसको रिक्वेस्ट को भेजेंगे. मतलब 1000 रुपीज फर्स्ट एंड 1000 रुपीज सेकेंड. सो 2000 रुपीज विल गेट द विल बी रिप्ले. हम लोग वही मैसेज को दोबारा ट्रांसफर करने के लिए भेजेंगे. okay? Alteration of message involves the some sort of changes in the original message. जैसे कि हम लोगों ने बताया कि $100 का जो रिकॉर्ड था वो अभी 1000 $1000 का कर सकते हैं. Yes. Denial of service attack makes an attempt to prevent legitimate users from accessing some server services which they are eligible for. Okay. आप लोगों को कोई number of users है and they want to access the server system but your unauthorized person will not provide this kind of accessing facility to that particular eligible uh, users. Okay. So unauthorized user might send too many login requests to a server using random user IDs one after another in fixed section. So flood of the network and deny other legitimate server users. तो सपोज मान के चलो कि चार यूजर है और कोई एक अनऑथराइज यूजर्स है तो वो क्या कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दिस फोर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैन बी सेम. बहुत अलग अलग नाम से या अलग अलग आईडी से वो अपने सर्वर को ब्लॉक करने की कोशिश कर देगा so that these four users will not able to access that particular server request. So this is all about the services